So today we are going to start new chapter, that is circle. Okay, in the last lecture we finished angles, correct? No, sixth chapter we finished angles. I hope everyone studied that chapter at home. सबने उसे practice किया होगा. How to draw the angle of the given measurement, and if the angle is given, how to measure the angle. Okay, with the help of protractor. I hope everyone done with that. Okay. Now today we are going to start circle. Okay, there are so many shapes. Okay, so in that we are going to start today circle. Okay, so in circle basically three concepts are there: radius, chord and diameter. ठीक है, ये तीन चीजें हम लोग को सर्कल इस चैप्टर में पढ़ना है. ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी द थिंग्स विच आर हैविंग सर्कल शेप, the things which are having circle shape. Okay, pan, clock, very good. Bangles, bowl, very good. A ring, good. Glass, glass top part. Okay, football, very good. So all these things are in a circle shape. Okay, now so this is a circle. Okay, now in this circle P is the center. Okay, lesson number 7, circle. Okay, and here in this first circle P is the center. The line joining the center of the circle to any point on the circle is called as radius of the circle. ठीक है, the line joining to the center of the circle, center है P. Okay, our center is P. Now the line joining to the center of a circle and to the any point on the circle is called as radius of the circle. जो लाइन सर्कल के सेंटर को और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे कहते हैं रेडियस. द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल to any point on the circle is called as radius of a circle. Now PM is a radius. Now if I draw line from the center to this point Q, so my PQ is again one radius. There are n number of radius. Okay, circle को बहुत सारे radius होते हैं. We can't count. So many radius are there. Okay. So in the diagram, in the first diagram, this PM is the radius. See, the center of the circle, the line joining to the center of the circle and any point on the circle is called as radius of the circle. Now here, from this center of the circle, I am joining the line on the circle, on the point of the circle L. इस L point को मैं यहाँ पे join कर रही हूँ. So PL is my radius. PS is my radius. Okay. So there are so many radius are there. Okay. Now second one is chord. Okay. A line joining to any point on a circle. A line joining any 2 points. A line joining any 2 points on a circle is called as a chord. Okay. सर्कल के दो कोनों कोई भी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहेंगे? chord. Okay. A line joining any 2 points on a circle is called as chord. Okay. So here
Mn is the chord. If I draw here any 2 points on the circle, okay, the line which is joining any 2 points on the circle is called as chord. So my AB is my chord. Okay, here in the diagram Mn is the chord. करेक्ट. सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहते हैं? chord. If I am drawing like this, okay, so this xy is my chord. Okay, these 2 points on a circle, x and y, and this line is joining these 2 points x and y. So this line is called as chord of the circle. Chord of a circle. Okay, so first is radius, second is chord, and third is diameter. What is meant by diameter? A chord passing through the center of the circle is called a diameter. Now see, a chord passing through the center of a circle is called as diameter. जो chord सर्कल के सेंटर से पास होती है, सेंटर से जाती है, उसे कहते हैं diameter. Okay, and diameter is the longest chord. Okay, सर्कल की बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? डायामीटर, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर हम लोग ने यहाँ कहीं पे भी ड्रॉ किया कॉर्ड को, दैट इज स्मॉलर देन द डायामीटर. करेक्ट, ये डायामीटर से छोटे ही होंगे, बट दिस डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. सर्कल का सबसे बड़ा वाला कॉर्ड कौन सा होगा? डायामीटर. ओके, व्हाट इज मीन बाय डायामीटर? अ कॉर्ड passing through the center of a circle is called as diameter. Okay, everyone understood this radius, chord and diameter? Radius means the line joining the center of a circle and any point on the circle is called as radius. जो लाइन सेंटर और सर्कल के ऊपर के कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे कहते हैं radius. There are so many radius, we can't count. Then second is chord. A line joining any 2 points on a circle is called as chord. सर्कल के कोई भी 2 points को join करने वाले लाइन को क्या कहेंगे? chord. And third, a chord passing through the center of the circle is called as diameter. सर्कल के सेंटर से जो chord पास होती है उसे कहेंगे diameter. Okay, these 3 concepts are clear, student? Radius, chord and diameter. Now, how to draw the circle? Now see, this rounder, okay, I hope everyone have the geometric box now. Okay, so this is a rounder. With the help of this rounder, we can draw the circle. Okay, this is the metal tip. And here we are going to fix your pencil. Okay, ये होता है मेटल टिप और यहाँ पे हम लोग पेंसिल को अटैच करते हैं. यहाँ पे पेंसिल को हम लोग फिक्स करते हैं. With the help of this we can draw the circle. Okay, so now how to draw the circle? Okay, by using a compass. We can call this as a compass also or rounder also. इसे राउंडर भी कहा जाता है और कंपास भी कहा जाता है. ओके, सो हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग अ कंपास. ओके, नाउ फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल फिक्स अ पेंसिल टू द कंपास. जैसे मैंने कहा, यू हैव टू फिक्स द पेंसिल इन अ कंपास. ओके, बट बिफोर फिक्सिंग द पेंसिल यू हैव टू चेक दैट द पेंसिल एंड द मेटल टिप इन आर टचिंग टू द ग्राउंड. मतलब पेंसिल ऊपर है, वो मेटल टिप नीचे है, या मेटल टिप से ज्यादा वो पेंसिल नीचे, ऐसा नहीं चाहिए. द बोथ मेटल टिप एंड पेंसिल शुड बी प्रॉपर. ओके, वो ग्राउंड या आपके बुक को टच करने चाहिए, दोनों ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए. ओके, प्रॉपरली अलाइन. नाउ यू विल टेक अ मेजरमेंट. ओके, ये ऐसे ही स्केल को हाथ में पकड़ के नहीं लेना है. यू विल कीप योर स्केल on the table or on your book and you will keep your metal tip on the zero.
I hope everyone have the scale, and 0 measurement is there. So you will keep your metal tip on the 0, and if you want to draw 2 centimeter radius circle or 3 centimeters radius circle, so you can take that measurement, okay, that centimeter distance in your compass. अब यहाँ पे 3 centimeter दिया है, correct, 1 2 and 3. So you will take the exact 3 centimeter distance in your compass, okay, that measurement you are going to take in your compass, and you will keep your metal tip, okay, and move this compass. आपको मेटल टिप को फिक्स रखना है एक जगह पे, दैट इज योर सेंटर, दैट इज योर सेंटर. जहां पे मेटल टिप रखोगे वो आपके सर्कल का सेंटर होगा. एंड मूव दिस कंपास सेकेंड आर्म, ओके, कंपास का जो सेकेंड आर्म है, वेयर वी फिक्स द पेंसिल, यू कैन मूव दैट आर्म. उस आर्म को मूव करने के बाद you will get the circle of the given radius. If the radius is given 2 centimeter, तो कंपास में कितना डिस्टेंस लेना है, कितना मेजरमेंट लेना है, 2 centimeter. And you will keep your metal tip, okay, on your book, and you will move this rounder. So the circle whichever you will get, that will be 2 centimeter. Okay, वो आपको जो मिलने वाला सर्कल है वो कितने डिस्टेंस का होगा, कितने रेडियस का होगा, 2 सेंटीमीटर. उसका रेडियस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस जितना होता है, ओके, रेडियस जितना होता है उसका डबल, उसका रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. Radius is the half of diameter. If the diameter is 4, then radius should be 2 only. जो diameter है उसका आधा radius होता है, okay? And diameter is twice of the length of radius, और diameter radius के double होता है. ये बात को समझो, okay? This is very important. Diameter radius के double होता है. See, this is one radius. This is the one radius, and this one is the second radius. If you add 1 and this 2, radius 1 and radius 2, so you will get the full diameter. So the diameter is twice in length of radius. Diameter का length radius से double होता है, और radius का length diameter का half होता है. Okay, if my diameter is 4, then my radius should be 2 only. मेरे डायामीटर का आधा मेरा रेडियस होगा. एंड इफ my radius is 3, then what will be my diameter? If my radius is 3 centimeter, then what will be my diameter? 6 centimeter. Correct, no? रेडियस के डबल क्या होगा, डायामीटर, और डायामीटर का आधा क्या होगा, रेडियस. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट, अंडरस्टूड? So today we are going to see this, okay? Okay? So we are going to solve problem set of lesson number 7, circle. Okay, here I told you circle, points to be remembered. The line joining the center of a circle to any point on the circle is called as the radius of the circle. The line joining the center of a circle to any point on the circle is called the radius of the circle. ये suppose circle है. The line joining to the center of the circle to the any point on the circle is called radius. सर्कल के सेंटर को और सर्कल के ऊपर के कोई भी पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल. A line joining any two points on a circle is called as chord. If
the line is joining any 2 points on the circle, that line is called as chord. सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स को अगर जो लाइन ज्वाइन करती है वो होती है chord. And if chord is passing through the center of a circle is called as diameter. जो chord सर्कल के सेंटर से जाती है उसे कहेंगे diameter. A chord passing through the center of a circle is called a diameter. Okay, and diameter of a circle is twice the length of its radius. Diameter of a circle is twice the length. मैंने अभी कहा कि जो रेडियस का लेंथ होता है उसका डबल होता है डायामीटर. इफ माय रेडियस इज 1 सेंटीमीटर then my diameter is 2. If my diameter radius is 2 centimeter then my diameter should be 4. जो रेडियस का लेंथ होता है उसका डबल डायामीटर होता है. डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ its radius. Okay, all the diameters of circles are of same length because it is passing through the center. That's why the diameter's length is same, the radius length is same. chord का length कम ज्यादा हो सकता है but radius and diameter's length is fixed because they are passing through the center. Okay, radius and diameter length is same, उनका length change नहीं होता है. diameter जितना होगा उतना ही हर एक diameter का length आएगा. if I am drawing diameter from point C, ओके, तो ए बी का लेंथ अगर जितना होगा उतना ही ये दूसरे वाले पॉइंट का, दूसरे वाले डायमीटर का होगा बिकॉज इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर ओनली. सो एक्स वाई इज द सेम. इफ आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस डायमीटर पी क्यू, सो पी क्यू का लेंथ भी उतना ही होगा. एवरी डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, उनका लेंथ सेम ही होता है. नाउ properties of the radius and diameter. Now, what is the properties of radius and diameter? A circle has innumerable radii. As I told you, there are so many radius are there. Okay, बहुत सारे radius होते हैं. We can't count. Innumerable. We can't count. All radii of a circle are equal in length. All radius are equal in length. उनका length equal होता है. If one radius is 2 centimeter, then all the radius of the circle is 2 centimeter only. There is no change in the length of the radius. Okay, a circle has innumerable diameters. Same, जितने radius होते हैं वैसे ही diameters भी होते हैं. Innumerable, we can't count. Okay, then all diameters of a circle are equal in length. Again, diameters of a circle are equal in length. And diameter is the longest chord of a circle. I told you now only the diameter is the longest chord of a circle because it is passing through the center. That's why diameter is the longest chord of a circle. Okay, I hope this is clear to you. So now we are going to solve problem set 28. Draw the circle of a with the radii given below. Okay, now so again I am telling, take a compass, fix a pencil, okay, and check that both the nibs are same. Okay, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. Keep both the tip on the ground and check that it is proper align or not. Okay, if yes, then keep your scale on the ground or on your notebook. Keep your metal tip on the 0 and your pencil on the 2. Okay, because our radius is given over here 2. That's why keep your pencil on the 2. Adjust करो उसे कम ज्यादा. Okay, and take a distance of 2 centimeter in the compass. Now
टेक अ कंपास विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट जो लिया है 2 सेंटीमीटर, उसे बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए उसे वैसे ही लो, एंड कीप द मेटल टिप ऑन योर नोटबुक, ओके, and don't move now your metal tip on the notebook. Fix it and draw a circle with the help of compass. जो पेंसिल वाला कंपास का आर्म है उसे घुमाओ, ओके, एंड draw a circle and give that center name. उस सेंटर को नाम दो. Give any alphabet, A, B, C, D, whatever you like. Okay. So here A is given. Here A is given. So A is the center of this circle and radius is 2 centimeter. Its radius is 2 centimeter. This is the circle of the radius 2 centimeter. Okay. इस सर्कल का रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर. सो वी हैव ड्रॉन ओवर हियर 2 सेंटीमीटर सर्कल. ओके, नाउ 4 सेंटीमीटर. Again same. Fix the pencil. Now already your pencil is fixed only. Okay, now again keep your metal point on the 0 and adjust your pencil arm on the scale so that you can take the distance of 4 centimeter on the scale. आप अभी मेटल टिप को 0 पे रखो और आपके पेंसिल का जो आर्म है कंपास का उसे ऐसे एडजस्ट करो कि जो पेंसिल का नीब है वो कहाँ पे आएगा 4 पे. ओके, एंड टेक अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन अ स्केल. ओके, उस कंपास में कितना डिस्टेंस आना चाहिए 4 सेंटीमीटर. टेक दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्केल. एग्जैक्ट लेना है. ओके, 4 centimeter. Now without disturbing the circle, without disturbing the measurement, keep your metal tip on your notebook and fix your center. Okay, and without disturbing your measurement, draw the circle of 4 centimeter. Draw the circle of 4 centimeter. आपको ऐसे नीब रख के ऐसे घुमाना है. Okay, you have to keep your center fix and you have to draw the circle. आपको ऐसे सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का. Okay, and give the name to its center. उसके सेंटर को आपको नाम देना है. Okay, so now I hope you will do the 3 centimeter circle. Again take the 3 centimeter distance in your compass. Keep the point on the notebook. It is your center and draw the 3 centimeter circles. So 3 centimeter radius circle. Okay. Now please pay attention over here. Question number 2. Question number 2. Draw a circle of any radius. Draw a circle of any radius. आपको कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है. Show one diameter, one radius, and one chord on that circle. Okay, you have to draw a circle of any radius of your choice. आपको जो लग रहा है उस रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करना है, and you have to show the diameter, radius and one chord on that circle. आपको एक diameter, एक radius और एक chord दिखाना है. Okay, so see over here. Here already one circle is drawn for you. Okay, you can take any distance, 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter. Okay, तो आप कोई भी आपको जो पसंद आए उसका आप एक सर्कल निकालो. Okay, and we have to show in that circle one diameter. What is mean by diameter? A chord passing through the center of a circle is called as diameter. Okay, जो chord सर्कल के सेंटर से पास होती है that is called as diameter. So we are drawing here diameter.
L and M. LM is the diameter. Diameter LM. Why LM is diameter? Because LM is passing through the center O. O is the center of a circle and this LM is passing through the center of a circle. That's why LM is a diameter. LM क्या है? Diameter. Now radius. Radius means what? A line joining to the center of a circle and any point on the circle is called as radius. जो लाइन सर्कल के सेंटर को और सर्कल के ऊपर के कोई भी पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे कहते हैं रेडियस. सो O is the center and P is a point on a circle. Okay, so this line is joining the center and a point on the circle is called as radius. So OP is the radius. So radius is OP. Okay, OP is a radius. And chord. Any two point, line joining any two point on a circle is called as chord. So here CD is a chord. Okay, C और D है जो दोनों पॉइंट है उन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? chord. So CD is chord. Chord CD. I hope everyone understood. LM is diameter, OP is radius and CD is chord. Okay, is chord. Okay, now here they want only one radius. Now here two more radius are there. How? See, here OM is also a radius and OL is also a radius. Why? Because O is the center and M is any point on the circle. तो जो लाइन ज्वाइन करती है सेंटर और एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस. तो OM ये भी एक रेडियस हो गया एंड OL ये भी एक रेडियस हो गया OL. So here three radius are there, OP, OM and OL. Okay, those three radius are given over here. Okay, now only I told you the radius is half of its length. Okay, और diameter's length. रेडियस होता है जो डायमीटर के लेंथ का हाफ होता है. ओके, एंड डायमीटर इज ट्वाइस लेंथ ऑफ इट्स रेडियस. रेडियस का डबल डायमीटर होता है और डायमीटर का हाफ रेडियस होता है. ओके, सो हियर three radius are there, OP, OL and OM. Okay, so here we finish problem set 28. Here we finish problem set 28. Now problem set 29. Problem set 29. Simple, very simple. बहुत सिंपल सा है ये. Problem set 29. If the radius of a circle is 5 centimeter, what will be its diameter be? एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है. सो व्हाट विल बी इट्स डायमीटर? डायमीटर कितना होता है? डबल होता है. करेक्ट नो? करेक्ट नो? सो आंसर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. करेक्ट, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डायमीटर. सो डायमीटर इक्वल्स टू 2 into रेडियस. डायमीटर रेडियस की डबल होता है. So if we multiply by 2, we are getting the diameter over here. So diameter equals to 2 into radius. 2 into radius. So 2 as it is. What is the radius of a circle? 5 centimeter. तो radius की जगह पे क्या डालोगे? 5. Okay. So 2 into 5 equals to 10. 2 5s are 10. And here which unit is given? Centimeter. रेडियस का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. तो डायमीटर का भी यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर ओनली. डोंट फॉरगेट टू गिव यूनिट बिकॉज दिस यूनिट इज आल्सो हैविंग मार्क्स. आपने सिर्फ 2 5 10 लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. व्हेन यू विल राइट द यूनिट आल्सो, दैट टाइम यू विल गेट द
full marks. Okay, so 2 5s are 10. 10 centimeter is the diameter of the given circle. Okay, उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा? 10 centimeter. Understood? Understood, student? Now, so again I am telling same example. If the radius of a circle is 5 centimeter, what will be its diameter? Diameter is double of radius. So what will do? Radius is 5 centimeter. So this is a formula. You have to find out diameter. So it is a formula. Diameter equals to 2 into radius. ये formula है. अगर आपको radius दिया है और आपको diameter निकालना है, then you will use this formula. Diameter equals to 2 into radius. Diameter equals to 2 into radius. Okay, so 2 into 5. 2 into 5 because our radius is 5. So 2 into 5 is equals to 10 centimeter. So our diameter is 10 centimeter. Don't forget the formula. Diameter equals to 2 into radius. Okay, now diameter is given. How to find out the radius? हम लोग को रेडियस दिया था तो हम लोग ने निकाला डायमीटर. अब हमें डायमीटर दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स रेडियस. हमें क्या निकालना है? उसका रेडियस निकालना है. नाउ सी, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स रेडियस? अभी डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस निकालना है. Again same answer. Diameter is 6 centimeter. Diameter is 6 centimeter. Okay, now this is the formula for the radius. This is the formula for the radius. If the diameter is given, how to find out radius? So this is the formula for the radius. Okay, now radius equals to diameter divided by 2. Okay, radius equals to diameter upon 2 divided by 2. So radius equals to diameter. What is the diameter of our circle? 6. 6 divided by 2. So 2 1s are 2, 2 3s are 6. So our radius is 3 centimeter. Our radius is 3 centimeter. भूलना नहीं, अगर रेडियस दिया है और डायमीटर निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 into रेडियस. ओके, और हमें डायमीटर दिया है और रेडियस निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2. ओके ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? नाउ सिंपल, वी हैव टू कंप्लीट द टेबल. सिंपल वन. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय यूजिंग फिलिंग इन द ब्लैंक्स. रेडियस इज 4. रेडियस इज 4. वी हैव टू फाइंड आउट डायमीटर. तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या है? डायमीटर 2 into radius. So our radius is given 2 into 4. 2 2 4s are 8. So हमारा diameter क्या आएगा? 8 centimeter. 8 centimeter. Okay. Again radius is given 8 centimeter. We have to find out diameter. Radius कितना दिया है हमें? 8 centimeter. क्या निकालना है? Diameter. Again same formula. Again same formula. Diameter equals to 2 into radius. So 2 as it is, radius is given 8 centimeter. So 2 8s are 16. So our answer is 16 centimeter. Don't forget to give unit. Okay. So our diameter is 16 centimeter. Now diameter is given. We have to find out radius. अभी हमें क्या दिया है? डायामीटर दिया है, हमें उसका क्या निकालना है? रेडियस. सो टू फाइंड आउट रेडियस, विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग? विच फॉर्मूला वी आर यूजिंग? डायामीटर बाय 2. डायामीटर इज गिवन 18. 18 बाय 2. 2 1s are 2, 2 9s are 18. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर. व्हाट इज आवर रेडियस? 9 सेंटीमीटर. हमारा रेडियस क्या आएगा? 18 का हाफ आएगा, 9 सेंटीमीटर, बिकॉज वी आर डिवाइडिंग 18 बाय 2. सो 2 1s are 2, 2 9s are 18. So our answer is 9 centimeter. If the circle is having 18 centimeter diameter, then its radius is 9 centimeter. Okay.
Again, we have to find out radius. What is the formula for radius? Diameter by 2. I am writing here only D, only R, but you will write the full. Okay, radius, diameter. आप ऐसे shortcut नहीं मारोगे. Okay, now what is our diameter? 22 centimeter divided by 2. 2 ones are 2. 2 ones are 2. 2 ones are 2. Okay, so our answer is 11 centimeter. If our diameter is 22 centimeter, then our radius will be 11 centimeter. Okay, तो हमारा radius क्या आएगा? 11 centimeter आएगा. Okay, okay student. So here we finish problem set 28 and 29. Correct student? I hope everyone understood this.